हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल वेट लाइफ निहाल। मैं निहाल श्रीवास्तव, प्रेजेंटली थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ BVSC NAH एट रांची वेटनरी कॉलेज BAU कांके। तो लाइफ काफ़ी अच्छा और बिजी चल रहा है अभी। बढ़िया बात ये है कि अब हमारा 5 लेवल में से थर्ड लेवल जो है, दैट इज़ द थर्ड ईयर, वो भी अब कुछ महीनों में ख़त्म होने वाला है। दिस इज़ अगस्त गोइंग ऑन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर फाइनल एग्ज़ाम्स ऑफ थर्ड ईयर एंड डन एंड डस्टेड। फिर फोर्थ ईयर में हम लोग जाएंगे। तो काफ़ी खुशी भी है कि अब धीरे धीरे करके एक लेवल क्लोज आते जा रहे हैं अपना डिग्री का। एंड थोड़ा सा वो भी लगता है कि अब इसके बाद क्या, 5 साल तो ऐसे ही देखते देखते पार हो गया। बट येस, एनीवेज, so been a very long time since I have made a video about anything. तो सजेस्ट किया करो कंटेंट यार, एंड मेक इट 1K सून एक्सपेक्टिंग। एंड थैंक्स फॉर बीइंग देयर। इवन आई एम नॉट मेकिंग रेगुलर वीडियोस, बट सब्सक्राइबर्स हैव इनहेंस्ड ग्रेजुअली। थैंक यू फॉर दैट। तो चलो अब बात करते हैं। नाउ दैट द नीट एग्ज़ाम्स आर ओवर, अब तो सब अपना कॉलेजेस खोज रहे हैं। ड्रॉपर्स ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे, और जिनको अब ज्वाइन करना है कॉलेजेस खोज रहे हैं। तो अब वेटनरी जो फील्ड है उसको ज्वाइन करने के रिगार्डिंग जो कुछ बेसिक्स है, जो आई शुड टेल यू टू फॉर्म एन ओपिनियन whether or not you should consider joining veterinary, if you are fortunately having that marks and rank and that you are eligible to get into a college through the VCI counseling. So here are some 5 things that I'm gonna share with you to help you form an opinion, or let's say that these 5 things you must be considering and keeping it in your mind before joining veterinary. तो क्या है वो 5 ऐसी बातें जो आप ध्यान में रखो अगर आप इसमें एडमिशन लेने का सोच रहे हो। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ में। Okay, so the very first point that I would like you all to keep in mind is that BVSC and AH is a UG doctorate course of 5.5 years. It is indeed respectful, it is challenging, but as well as rewarding at the very same time. 5.5 years is no a joke. अदर ग्रेजुएशन कोर्सेज जो होते हैं वो आपके 4 ईयर्स में कंप्लीट हो जाते हैं, बट इट इज़ अ डॉक्टरेट यूजी डिग्री। सो इसको करने में थोड़ा टाइम स्पेंड ज़्यादा लगता है। 5.5 ईयर्स जो है, इतना आपको पेशेंस रखना होगा अगर आपको ये ग्रेजुएशन डिग्री करना है। तो इफ़ यू आर रेडी टू पुट इन द हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स फॉर 5.5 लॉन्ग ईयर्स, देन दिस कोर्स इज़ फॉर यू। सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस टफ येट एडवेंचरस डिग्री. Now the next point that I would like to cover is related to the careers perspective. From the futures perspective, जैसे we are students, we obviously would think it about like इसका आगे चल के हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा. तो I would like to tell you that there is no dearth of opportunities in this field. ठीक है, but there is job security as well as competition simultaneously at the same time. You have to work, you have to chase the opportunities. Nobody is going to serve it on your plate. If you are ready to put in efforts, job is already secured. And nobody is there who would complain about not getting a good job. So career wise it is very much secure, you don't have to think about it. But the qualities that I would like you to imbibe in order to become a successful veterinarian is firstly considering about the factor of discipline. Next, that would be is to being curious. That is the quality of being able to grasp things around. It should not be a passive movement. You would not be like sitting idly and expecting things to come to you. Rather than be focused, be alert, be active, and engaged in learning new skills and thinking capabilities, so that you might develop the skills required to acquire a good and successful job. Next, that would be the third 3 out of 5, that it needs hard work, perseverance, and as well as patience to pursue this profession. Likewise, I am saying all the time in all my videos, don't join this course as a backup option, like you are planning for something else and this is just going side by side. Mostly that is the case with the knee dropper students. Do not do this. Considering it is a backup option will not only degrade this very profession but also hamper your future plannings and commitments towards your career goals. So it is very likely that if you are joining it without passion, you would likely
want to escape out of it, get back out of it, and which won't be a justification to this profession. So I would like to let you have this in mind that only if you have passion for this, like आपको अगर लगता है that you can actually pursue this with interest, मन के साथ में करोगे खुशी खुशी, then it is a very good choice. आप बहुत खुश रहोगे, you will enjoy. But if you are considering it as a backup option, or you're not putting it that very much efforts, your college life is gonna be ruined. Keep this in mind, it is very important. Fourth point, that is the causal factor of the third point, is that do not consider this as inferior or superior to other courses. ठीक है, I totally understand and experience this, that you might face criticism or various diverse forms of opinions about the course from persons who absolutely have zero knowledge about this field. मतलब वैसे वैसे लोग भी आपको एडवाइस कर सकते हैं कि ये क्या चुन लिए हो, या ये क्या कर रहे हो, या रिलेटिवली अननोन है, इसमें ये होगा वो होगा, जिनको एक्चुअली वेटनरी का भी नहीं पता है, हु डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ वेटनरी. सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल्स ओपिनियन. बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर चॉइस. ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना दैट आई एम चूजिंग इट आउट ऑफ माई इंटरेस्ट एंड आई एम गोना मेक माई करियर सक्सेसफुल विद माई हार्ड वर्क एज वेल एज लक. So definitely have faith in yourself and wait for those people who sort of demoralize you to contact them in future for your guidance and advice. Last point that I would personally like to convey, and I myself feel that it is the right point, that firstly be thankful that if you are getting into this stream, बिकॉज विद द टाइम्स अब जैसा नीट का सिचुएशन हो गया और मेडिकल का सैचुरेशन हो गया है, ऑब्वियसली वेटनरी इज़ ऑल्सो गेटिंग वेरी डिमांडेड. तो अगर आप इसमें एंट्री ले पा रहे हो, जैसे अब हम लोग अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट कंसिडर करते हैं कि एटलीस्ट हम लोग सही टाइम पे सही जगह पे आ गए. इससे भी घटिया मतलब लो ग्रेड कोर्सेज थे अवेलेबल, बट वी हैव लैंडेड अप टू अ वेरी सेफ एंड सिक्योर एज वेल एज हैपनिंग place. So if you are able to get into this veterinary medicine, consider yourself fortunate, be thankful, and live your college life to the fullest. There should be no place for regrets, no place for any kind of discontentment. Be very happy that you are able to experience this wide spectra of multifunctional biological systems comprising of so many various animals, diseases, and whatnot related to medicine. Though you have to keep in mind, first and foremost priority when you get into the college, make it a marking point from the very first beginning year. Pay attention to your studies. Okay, जब भी आओ कॉलेज में, मतलब फर्स्ट ईयर इज ऑफ enjoyment phase, but keep in the back of your mind that you have to pay attention to your studies, as well as studies alone are not sufficient, because you have to make connections, interactions with the seniors, interactions with the teachers, interaction with the whole environment ecosystem around you, to learn and enhance your personality and skills. तो ये सीखना है यहाँ पर ही, अपना हॉबीज़ को इनकलकेट करना है, उसको रिफाइन करना है, जितना चीज़ हो सके पार्टिसिपेशन करना चाहिए. इन्जॉय. इफ़ यू आर फीलिंग लाइक यस, इफ़ आई परस्यू दिस कोर्स, अगर हम वेटनरी में आते हैं, आई विल बी हैप्पी, I can enjoy, I don't have to worry for my career perspective, and I don't care about what other things of it, but obviously it is a good profession. Then close your eyes, go for the counseling, and if you get a seat, just join this. If you have got rid of that NEET zone, ड्रॉपर्स के लिए हम स्पेशली बोलेंगे कि डोंट कंसिडर ज्वाइनिंग इट एज अ बैकअप ऑप्शन, प्रिपेयर सेपरेटली, एंड इफ़ यू आर कमिंग इन, enjoy the field. Whatever happens in future, if you want to go out, that's completely your choice. So with this, I would like to wrap up this video, but again, very much thankful for everyone who are connected to me, and you can suggest whatever opinions you have to me personally as well as on the comment section. So see you with hopefully some good videos next time. Till then, take care. Go for the counseling. VCA counseling is going to start very soon, and as well as the state counselings are going to start as well.
अपना चॉइस पे कॉन्फिडेंस रखो। बहुत लोग ऐसे थे जो डिज़र्विंग भी नहीं थे, वो भी यहाँ आकर के खुश हैं कि हम लोग अच्छे जगह पहुँच गए हैं, इससे बुरा जगह हम लोग जा सकते थे। सो आई नाउ पर्सनली हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर माई वेटनरी प्रोफेशन एंड आई स्टैंड फॉर इट। कोई कितना भी ख़राब बोलता है, आई डोंट पे अटेंशन बिकॉज आई नो इट्स वर्थ नाउ. So same I would like to convey to you all. Keep these 5 important things in your mind and make your own decision if you want to get into this field or not. And if yes, see you as my junior colleague or whatever. Bye bye. Take care.